Hello everyone, welcome back to my channel. I'm KIRAN back with another video for you guys. So today's video is a kind of talk through video. मैं आज कुछ स्टाइलिंग नहीं करने वाली हूँ, कुछ फैशन नहीं करने वाली हूँ, कुछ ब्यूटी नहीं करने वाली हूँ, कोई हॉल्स नहीं करने वाली हूँ. इंस्टेड मैं जो करने वाली हूँ वो है आज कि मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ. तो मैं जो अपने वीडियोस चेकआउट कर रही थी, आई रियलाइज कि मैंने कभी अपने चैनल पे कोई नो मी टैग किया ही नहीं है. एंड आई हैव नेवर शेयर्ड विद यू गाइज कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, एंड यू नो सर्टेन अदर क्वेश्चंस प्रॉब्ली विच यू वुड वांट टू नो फ्रॉम माय साइड. मे बी जब ऑडियंस कभी ग्रो हो जाएगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो. बट फॉर दिस वीडियो आई पिक्ड अप सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम गूगल एंड लाइक सर्टेन थिंग्स विच वर कमिंग इन माय माइंड एंड आई थॉट प्रॉब्ली दिस विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर विद यू गाइज कि मैं क्या करती थी, क्या करती हूँ, कैसे मैं कंटेंट क्रिएटर बनी एंड 100 अदर थिंग्स प्रॉब्ली विच यू वुड वांट टू नो. जो कि 100 तो नहीं होंगी बट लाइक या कपल ऑफ मे बी प्रॉब्ली 10-15 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू टुडे, जहाँ पे प्रॉब्ली थोड़ा सा आपको मेरे बारे में जानने को मिल जाएगा एंड मे बी यू वुड नो दैट हाउ सिमिलर वी गाइज आर और हाउ डिफरेंट वी गाइज आर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द नो मी टैग. सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अबाउट माय नेम, एज, वेयर वाज आई बोर्न एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक जर्नल बायो इंफॉर्मेशन. So let's start with that first. I am KIRANKhokhar by now. I'm sure you are aware because you must have been listening to my introduction quite frequently now. I'm 32 years old. My birthday has just crossed. So it was on 18th May 1990 born हूँ मैं. So basically a millennial. उसके अलावा I was born and brought up in Delhi and मेरी schooling सब कुछ दिल्ली से ही हुआ है. And I recently shifted to Noida, which is like almost 3-4 years back. Next question is, what is my relationship status? Am I single? Am I dating somebody or divorcee? What is it? So 32 years old हूँ but not married yet. Well, I'm dating somebody from a really long time and अगर आप मेरे social media follow करते हो then probably you would know him, and if you don't know him then his name is Saurabh and probably getting married to him soon. So that's about my relationship status. Now the next question is, what about my family? Who all are there in my family? So I have 2 younger siblings who are my brothers, and then I have a mom, dad, and then this cutie who is my Ray and my soul son. And I don't know what his future going to be, but he is going to be the sole heir of my property. तो जो भी होगा इसके नाम तो प्रॉपर्टी फॉर श्योर होनी है. क्यों? अगर ये मुझे तंग नहीं करेगा तो तंग करेगा तो भी इसी के नाम है ना. So that was my dog Ray and I absolutely lovingly adore him. If you're gonna see his clips here and there, मैं अपने moments जो हैं इस पूरे talk through में डालती भी रहूँगी कुछ जो मैंने शेयर किए होंगे सब इंडिविजुअल्स के साथ जिनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ एंड अपने बारे में भी. तो I love him a lot. He is very precious to me, and since the time he has entered into my life has changed completely. I just cannot live without him. So that is about another family member I have. Now talking about the background check. So मैंने क्या क्या किया है past life में, मेरे क्या क्या jobs and profession रहे हैं. Let's talk about that. So I started working when I was 17 and I started from hospitality sector. So मैंने hospitals में काम किया था. उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने hotels में भी इधर छुटपुट काम किया है. After that for good 3-4 years I have worked as a cabin crew, and firstly I was with Kingfisher and then I was in Indigo. Then I was kind of done with the crew job and मुझे आगे पढ़ाई भी करनी थी. So I was kind of wanted to save some money for my future studies. तो मैंने जब ये जॉब वॉब कर अपने लिए थोड़ा सा पैसा सेव कर लिया because I don't come from a very affluent background. I had a very middle class family. Instead you can say it was not even properly middle class. It was just economical family background I had, and it was pretty tough to survive in those days, but the job helped me a lot, and because of that I was able to save a bit of money and put it into my future studies. So after I saved some money for myself, I went for my further studies, which was in NIFT. मैंने वहाँ से की है अपनी masters in fashion management, and from there me and my boyfriend we thought that let's start a business. So he has a background of chartered accountant and हमने सोचा थोड़ा सा कुछ business start करते हैं of a clothing line, and that is how we came up with our t-shirt brand, which is not something which I kind of boast about, but yeah, people who know me know that I have a brand of that kind.
So it's particularly in menswear, and it's by the name of SV Stylog and Albatross. तो ये छोटे दो ब्रांड्स हैं जो कि मास ब्रांड्स हैं, एंड हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये सेल करते हैं इन मेंस वेयर कलेक्शन. So that's about our brand which we have built up together from last 5-6 years, and it's touch wood been running really well and good. At that time itself ये content creation का जो craze था वो काफ़ी ज़्यादा popular नहीं था, but it was there, so people were getting into it. So I started my blog which was by the name of Indian Chic, and because you know मैंने ये word उस time recently find out किया था. So मेरा जो पहला Instagram handle का नाम भी था वो भी Indian Chic के नाम से था. So it means Indian and sophisticated, like Parisian chic होता है. So that is how it was Indian chic, but often it was being pronounced as Indian chic, and I took a decision of changing my name, and even my blog got hacked. So when my blog page got hacked and I couldn't retrieve it back, और मेरे पास उसका data भी नहीं था, so I took a decision of changing my Instagram name, and उसको मैंने किरण खोखर के नाम से change कर दिया. And अभी तक मैं वापस blogs पर नहीं आई हूँ, but I would soon want to start it again and write all my fashion and travel stories there, probably to share it with you guys, and so that you guys can learn from it, and probably it might help you with some tips and tricks. So I did not start as an Instagram influencer. मैंने अपना blog start किया था, and from there gradually I shifted to Instagram content creation, which was very different back then. But अभी के time पे it has become like an Instagram influencer kind of thing, so you can call me that as of now. Along with that, majorly मेरा core जो काम है वो है मेरा clothing business, and I do this because I love doing this. So yeah, plus I love making YouTube videos, so now you can call me as YouTube content creator as well. चलो, तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन. मैंने आपको काम का बारे में बता दिया कि क्या क्या माई रिलेशनशिप स्टेटस, माई लाइफ एंड फैमिली लाइफ. सो दीज क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू टेक राइट नाउ विल बी द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि मुझे अपने सोशल मीडिया पे भी मिले हैं, एंड ऑल्सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर लाइक नो मी टैग क्वेश्चंस ऑन गूगल. So I am going to answer them one by one for you guys. So the most frequently asked question is like, what is your height? I am 5'9", and yeah, 32-year-old that I have already told you. Please tell us when you were born. ये भी मैंने आपके साथ share कर लिया है that I am 1990 born. And what's your full name and are you proud of it? What's my full name? My full name is KIRANKHOKHAR. Am I proud of it? I'm totally, absolutely proud of it. Instead, मेरा जो नाम का मतलब होता है, that means Ray. So now you would know that why my dog has his name as Ray, because you know, Kiran means rays. So yeah, that is the resemblance. Are you named after someone? If yes, then after whom? I don't know if I'm named after somebody, but मेरा जो पहला नाम था वो था निशा. You guys tell me अगर निशा मुझ पे सूट करता है कि नहीं करता है. So निशा मेरा नाम जो था वो मेरी ग्रैंडमदर ने पिक किया था, and then my mom did not like that name, so she named me गौरी. And फिर दोनों, मेरी जो ग्रैंडमदर थी उनको मेरा नाम गौरी पसंद नहीं आया, तो दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके फिर मेरा नाम किरण रखा था. तो इसीलिए जो मेरा आप राशन कार्ड जिसको बोलते हैं उसके अंदर भी नाम देखोगे तो वहाँ पे पहले वाले में निशा था, फिर गौरी था, एंड आई गेस किरण तो आज तक शायद अपडेट भी नहीं हुआ है. So that is how I got my name. What is your nickname? So it's very funny, and I had been bullied a lot during my school days on this name. So my name is Sweetie, and that is my nickname, like what my family calls me. So but मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया है इस पर, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी. So let's move on to the next question, which is do you love playing any sports or just watching it? Just watching it? I don't think so. Playing any sports? Yes, and I had been very athletic during my school days as well. तो मैं काफ़ी ज़्यादा sporty थी, and मैंने state level पे भी काफ़ी sports खेले हैं. So I had been a runner as well, and besides that I had been into volleyball, badminton, and such games. Even I love swimming. So yeah, these are the few things. Do you love animals? If yes, then which one you love the most? So This one I love the most. This is the one who is licking my hand from last 15 minutes is the one I truly love the most. Besides that, I love all the animals until unless they are not attacking us. Yeah. What is your favorite thing to drink? My favorite thing to drink is going to be cold coffee.
without fail, yeah, cold coffee is my favorite thing to drink, but it should have less milk. That is the only concern. Otherwise I love cold coffees. I guess मैं कहीं पे भी जाती हूँ, cold coffee is something which kind of, जैसे किसी के लिए कोका कोला वर्क करती है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है, मेरे लिए वो जो एक रिफ्रेशिंग एजेंट है ना, वो मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी? द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज कैन बी प्लेइंग इन रेन, जो कि अब थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसके लिए. आई डोंट नो, आई लिव ऑन 8th फ्लोर, मे बी दिस इज़ वाई, बट पहले मेरा जो घर था वो बिल्कुल उसके ऊपर टेरेस था. सो जब भी बारिश होती थी, I used to quickly run on my terrace and just dance under the rain, which used to be my favorite thing to do. However, बहुत डांट पड़ती थी मम्मी से उसके बाद, but I used to love dancing in the rain, which I should do again, I guess. Next question is, do you consider yourself as an extrovert or an introvert? So actually it's a very nice question, because friends who know me might think कि मैं बहुत ज़्यादा extrovert हूँ, because मैं काफ़ी talkative हूँ and I love to meet people. But actually I'm a very introvert and shy person. It takes a lot for me to open up, and but when I open up हो जाती हूँ, then I'm a party person. So but yeah, for initial stage मैं थोड़ा सा shy हूँ और काफ़ी introvert भी हूँ. You might not see me coming up to you or approaching you by myself. It's not because I will have attitude or I would be thinking कि मैं तो सबसे ज़्यादा फैंसी हूँ, बट या इट काइंड ऑफ, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा मैं घबरा जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू न्यू पीपल. और मेरे ना सबसे ज़्यादा वाइब भी बहुत मैटर करती है. सो इफ़ आई फील लाइक इट इज़ वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू टू टॉक, देन फॉर श्योर आई विल बी हैंगिंग आउट विद यू इन जस्ट अनदर सेकेंड. यूजली मैं वेट करती हूँ कि सामने वाला इंसान जो है थोड़ा सा मुझे अगर अप्रोचेबल लगेगा तो फॉर श्योर आई विल गो अहेड एंड टॉक टू यू. बट अगर मुझे थोड़ा सा लगेगा कि probably you are not willing to talk right now, then maybe I will take my side, I will take my time off and wait for ice to break eventually. Yep, so that was your answer for if I'm an introvert or an extrovert. Next question is, what is your favorite quarantine activity? Spending time with my friends and family. That is my favorite thing, specifically with my dog. I love to spend time with my people I love. मुझे अच्छा लगता है उनके साथ डेट नाइट स्पेंड करना, डेट नाइट प्लान करना, बुक्स रीड करना. ये सब मेरी फेवरेट क्वारंटीन एक्टिविटीज़ हैं, एंड आई गेस I love doing that. I love spending time with myself, also with my friends and family as well. If you could be stuck with one person during this lockdown, who would it be? Of course, Ray. It has to be Ray. If it's, I guess we should have put it like one person or animal. मैं for sure without blinking my eye, I'm going to choose Ray, because he is such a savior. He is such a goofball, and उसके साथ दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. अगर मुझे किसी के साथ लॉकडाउन के अंदर टाइम स्पेंड करना है तो मैं for sure Ray चूज़ करूँगी without thinking. Ray जब नहीं था तो मैं अपना बॉयफ्रेंड चूज़ करती, but since he has come in, then I am wholesomely going to choose Ray. Okay, what is your greatest achievement in high school? Okay, to talk to people. That was my greatest achievement in my high school. Okay, do you love music? Which genre is your favorite? Do I love music? And with genre, of course I love music. My boyfriend sings and music is part of our daily routine as well. I absolutely love music. What genre I like? I am not that specific about music. मेरे लिए क्या होता है, अगर म्यूजिक मुझे हिट करता है then for sure I love it, be it Ali Sethi Pasuri to going all jazz. I love every sort of music which makes me feel myself. So that is what I'm going to say and answer to it, because I don't go by trend कि अभी ये ट्रेंड कर रहा है तो ये मेरा म्यूजिक अच्छा है. मुझे जो अच्छा लगता है ना, मतलब मुझे जो सूद करता है या मुझे जो फन वाइब देता है at the same time, so I go with that music. So next question is, what is in your bucket list and where all do you want to travel? Okay, so my bucket list is pretty huge. एक्चुअली नहीं, इतनी ह्यूज भी नहीं है, बट देन कहाँ कहाँ मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ वो फॉर श्योर लिस्ट बहुत लंबी है. बट लेट्स स्टार्ट विद द बकेट लिस्ट. बकेट लिस्ट में मेरी 4-5 चीज़ें हैं, बिकॉज उससे पहले जो चीज़ें थी वो मैं अचीव कर चुकी हूँ एक्चुअली. एंड काइंड ऑफ मैं इतनी मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था. आई डोंट प्लान माई थिंग्स
that long. I do plan my future but not like to that extent. So bucket list में मेरे क्या क्या था? I had to get a dog. I have a dog. I wanted to shift to a better house. I have a better house. Then a good life. That was in my bucket list. Touch wood. अभी तक तो सब सही चल रहा है. I do want to own a house of mine. So that is still there in my bucket list. So probably in another 2-3 years or maybe like this year, I might have my own house. That is there on my list. Yep. Besides that, just travel as much as possible. वो एक है थोड़ा सा बकेट लिस्ट में. ट्रैवल में कहाँ कहाँ करना चाहती हूँ? होल ऑफ इंडिया फॉर श्योर. मैंने काफ़ी इंडिया घूमा भी है बट नॉट फ्रॉम ट्रैवल परस्पेक्टिव. आई हैव जस्ट विजिटेड प्लेसेस बट नाउ आई वांट टू ट्रैवल टू प्लेसेस. Abroad India, I want to go to for sure Greece, Maldives, Italy. Then there is Bora Bora Island and a huge list is there. Let's see कितना हो पाएगा, कितना कर पाएंगे. But frankly लिस्ट बनाने से अच्छा है मुझे जहाँ मौका मिलेगा, मुझे जो चीज़ देखने को मिलेगी, I would be so much happier to go anywhere in this whole damn world. Now moving on to the next question, which is what is the craziest thing on your bucket list? Craziest thing on my bucket list आज सच तो कुछ नहीं है. आप बोल सकते हो जो शादी होने वाली है वही craziest thing होगी मेरी bucket list में. मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्योंकि this is going to be the craziest thing in my life. I guess पहले मैं कभी सोचती थी कि मेरी लाइफ में शायद मैं कोई pet animal रख ही नहीं पाऊंगी because I travel so much, I go out so much. But look at the life, how it has turned out. I have Ray and he is the most important part of my life at this moment and I'm still traveling. So I guess आप जब लाइफ में निकलते हो और अपने लिए चीज़ें सेट आउट करते हो तो लाइफ अपने आप आपके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर देती है, पाथ ओपन कर देती है. तो वही हुआ है एंड यप ऑल इज वेल. सो ऐसा कुछ मैंने अभी फ्रैंकली क्रेजी सोचा नहीं है कि मेरी बकेट लिस्ट में क्या है. Now coming to last few questions जो कि quickly answer करेंगे and then we are going to wrap up this video. Do you think you are successful? How do you define success? Do I think I am successful? तो होता क्या है ना, हमें सोशल मीडिया ने और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने इतना कुछ सिखा दिया है कि बाय द एज ऑफ 30 और 35 आपको इतना कुछ अचीव कर लेना है लाइफ में तभी आप सक्सेसफुल होगे. फॉर मी आई कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल एवरी डैम डे बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है. भले ही पर मैंने ना कभी अपने आप को सोचा भी नहीं था. आई नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ टू बी दैट. I am ambitious. I'm not gonna say I'm not ambitious, but I'm not overly ambitious in my life कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए. ऐसा कोई थॉट मेरे दिमाग में नहीं है. Only thing I wanted to do in my life is to have a happy, good, healthy life with good people around me, with my good friends, a good, nice partner, good family. That's about it. And अगर उसको हम successful बोल सकते हैं, then I guess I'm very, very, very successful. अगर आपके successful terms कुछ और हैं, then I don't know अगर मैं उस हिसाब से सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ, बट मेरे आईज में एंड पीपल हु आर अराउंड मी आई गेस आई एम प्रीटी सक्सेसफुल बिकॉज आई एम हैप्पी. एंड आई गेस लाइफ का अल्टीमेट गोल ये होता है कि आप अगर खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल भी हो और आप खुश नहीं हो तो आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स, बट आई एम हैप्पी एंड आई गेस दैट इज सक्सेस टू मी. सो एंड दिस इज हाउ आई डिफाइन सक्सेस ऑल्सो कि अगर आप अपने बिल्स पे कर पा रहे हो टाइम पे, आपको फालतू का स्ट्रेस नहीं है, आप एक अच्छी हैप्पी हेल्दी लाइफ जी रहे हो और आपका एक रनिंग इनकम है, तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसफुल हो. आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. और सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि यू हैव टू कम अंडर लाइक फोर्ब्स 30 under 30, 40 under 40. नो ब्रो, चिल, हैव फन, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. सो लास्ट क्वेश्चन जो होगा अब वो है वेयर इन योर करियर डू यू वॉन्ट टू बी इन लास्ट 10 years? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं कभी नहीं सोचती हूँ. मेरे ख्याल से अगले 10 साल का तो बहुत ही मुश्किल है सोचना, क्योंकि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था टू जहाँ मैं हूँ मैंने कभी वो भी नहीं सोचा था. आई गेस ओनली थिंग while I was growing up I was saying to everybody who was around me was that all I want is to be happy and that was my ultimate goal. And I guess अगले 10 साल तक भी मेरा वही अल्टीमेट गोल रहेगा कि मेरा सराउंडिंग मैं खुद बहुत खुश हूँ बस. उसके अलावा 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ? प्रोबेबली रे के 2 बच्चों के साथ और एक छोटे से घर में जिसके अंदर काफ़ी वेंटिलेशन हो, जैसे कि इस घर में भी है, बट वो घर मेरा अपना हो.
एंड यप दैट्स अबाउट इट। आई गेस यही मेरा कुछ अगले 10 साल का गोल है और तो कुछ दिमाग में मेरे है नहीं। हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट्स इट एंड दैट्स अबाउट इट। आई गेस यहाँ पे रैप अप करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रॉब्ली वी विल डू समथिंग लाइक दिस और मे बी सम अदर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो, बट ये एक छोटा सा ब्रीफ था about me which I wanted you guys to also know. I hope आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एंड अगर कोई और questions भी हैं which you would want to know from me about me, so do let me know in the comment section. Maybe मैं अगले 3, 4, 5, 6 महीने में एक और फिर वीडियो बनाऊंगी and then I will put up these questions in that video जब थोड़ी और audience grow कर जाएगी। But अभी के लिए these are the few questions which I thought probably you would want to know from me, या फिर मैं आपके लिए शेयर करना चाहती थी अपनी साइड से। So this was a video on that and yep, I had a lot of fun answering these questions. I don't know, I can't see you guys, but it kind of felt like a relationship. It felt like I'm talking to my friends and sharing my feelings because मैंने पता नहीं बहुत ज़्यादा कभी अपने बारे में किसी के साथ शेयर किया नहीं है। हम लोग रोज़मर्रा लाइफ में भी आजकल आई गेस ऐसी बातें करते नहीं हैं, बिकॉज ऑल वी टॉक अबाउट हाउ मेनी सोशल मीडिया फॉलोअर्स, हाउ मेनी एंगेजमेंट, कितना क्या हो रहा है। जर्नल लाइफ के बारे में बहुत कम बात करने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगा। इट फेल्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू माई फैमिली who might be virtual, but you guys probably would want to know something about me, and I felt really good sharing this part of my life with you. So thank you so much for watching, and if you liked this video, make sure you like, comment, share and subscribe as usual. Also turn on the notification bell because you won't get to know otherwise that I'm uploading weekly videos. Also, I would love to have you guys on my Instagram, my Facebook family, social media links बिल्कुल यहीं पर mentioned हैं, so make sure you come and join me there. I would love to have you guys on my social media family as well. I love you guys a lot and I mean it. I'm not just saying it just to say it. I love you guys from the bottom of my heart. Thank you for always being there and supporting me, motivating me, and आपके अच्छे comments जो आते हैं नीचे comment section में, वो मुझे बहुत ज़्यादा support करते हैं, बहुत motivate करते हैं। Someday in this life, when we are going to look back to this video, probably we are going to feel good together. आज हम 2K पे हैं, maybe like in another few months we will be like, you know, 10K, 50K, who knows. So let's aim for that. I'm KIRAN KHOKHAR. I'm gonna see you in my next video. I love you guys. Bye bye.